बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we learn how to resolve error 503 service unavailable or the connection pool name Apex had the following errors: ORA 28000. The account is locked in Oracle Apex 21.2 and earlier version InshaAllah. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ये एरर 503 सर्विस अनअवेलेबल को हल किया जाता है और द कनेक्शन पूल नेम एपेक्स एट द फॉलोइंग ORA 28 3 दफ़ा 0 दी अकाउंट बंद है इन Oracle Apex 21.2 और इससे पहले के वर्जन में इंशाअल्लाह। We have installed Oracle Database 21C Pluggable। हमने Oracle Database 21C Pluggable जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है that Apex Public, उसकी वजह ये है कि Apex Public यूज़र जो है वो अनलॉक है। The reason behind this error is that Apex Public user is unlocked. Now come to command prompt and press Ctrl+C to stop ORDS. अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और Ctrl+C दबाएंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे, फिर C दबाएंगे, press and hold Ctrl button, then press C button in order to stop ORDS. Now we stop ORDS. हमने ORDS को बंद कर दिया है। So now open SQL Plus। अब हम SQL Plus में आएंगे, SQL Plus को खोलेंगे, कनेक्ट विथ sysdba, कनेक्ट हो जाएंगे sysdba से। Now we will run this command because we have a pluggable database installed. अब हम ये कमांड चलाएंगे क्योंकि हमने pluggable database इंस्टॉल किया हुआ है। Now we will run this command for our satisfaction that Apex has installed. अब हम ये कमांड चलाएंगे अपनी तसल्ली के लिए कि हमने Apex को इंस्टॉल किया हुआ है। अपनी तसल्ली के लिए कि Apex Public यूज़र जो है वो लॉक है। We run this command for our satisfaction that Apex Public user is locked. Now we will run this command to unlock Apex Public user। अब हम ये कमांड चला रहे हैं ताकि Apex Public user को अनलॉक कर दें। Now status change into open। अब इसका स्टेटस जो है वो खुल चुका है। Now we will remain in command prompt and run this command। अब हम command prompt चलाएंगे, हम command prompt पे ही रहेंगे और ये command चलाएंगे। And when Oracle Plus data services initialize appear, we can access Oracle Apex 21.2। जब Oracle Plus data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर सकेंगे। So now we have resolved this error। हमने इस एरर को ख़त्म कर दिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.